Hello everyone and welcome to this new video. In this video we are going to talk about early Vedic period and we will cover all the important pointers which are required for your exams like UPSC, PCS or any other state competitive exams. Okay, so this is not a comprehensive video. This is just factual based video and there are important pointers for you to revise, or if you are preparing for any state PCS or the one day competitive exam, so this is going to be useful. And if you are preparing for UPSC, you can revise through this video. Okay, so let's understand the objective first. तो हमारा objective जो रहेगा that would be to understand that how uh, early Vedic period started after the decline of Harappa. Then we will understand कि ऋग्वेदिक period में था क्या, like basic characteristics. After that we'll talk about Vedic literature, then political organization, then social life and economic conditions, and last but not the least we will talk about the religion of early Vedic period. Okay, so let's get started और हम इस वीडियो को bilingual रखेंगे. So first of all, how it was started after the decline of Harappa. So अगर इसको दूसरे वर्ड्स में बोलना है तो we will say origin of Aryans. So by and large the origin of Aryans is controversial. There are two views on it. The first view is that Aryans were नेटिव ऑफ इंडियन सॉइल. दैट मीन्स कि वो इंडिया में बहुत पहले से रह रहे थे और वो कहीं बाहर से नहीं आए थे. दूसरा व्यू ये है कि दे माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप. एंड इट सीम्स अप्रोप्रिएट ऑल्सो. आई मीन ये व्यू जो है ये सही माना गया है बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एज बोगा जकाई इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें डिफरेंट नेम्स बताती है जो कि वैदिक रिलीजन से एसोसिएटेड है. जैसे इंद्रा का नाम है, उसमें वरुण का नाम है, मित्र का नाम है और नसत्यास का नाम है. ठीक, तो इस वजह से जो सेकंड वाला व्यू पॉइंट है दैट आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड, उसको ज़्यादा वैलिडिटी दी जाती है. देन ऐसा माना जाता है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से सेवरल स्टेजेस में आए, यानी कि वेव्स में आए, एक साथ सारे लोग नहीं आए. तो ये जो वेव्स थी ये 2000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक चली और फाइनली 1500 बीसी में हड़प्पा का डिक्लाइन हो गया और जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, जो वैदिक कल्चर थे, वो पनपने लगे. सो इनिशियली जब वैदिक या फिर आर्यन पीपल जो थे, आर्यन जो थे वो बाहर से आए, सो दे सेटल्ड ऑन द प्रोविंस विच वर ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया और ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. तो जो रीजन प्रेजेंट डे पंजाब का है वहाँ पर दे फाइनली सेटल्ड एंड उस रीजन को इन्होंने नाम दिया सप्त सिंधु का. सप्त सिंधु का मतलब है जहाँ पर 7 नदियाँ बहती हैं. एंड further, after settlement, they moved to the interior parts later on. So, this was about the origin. Now, let's understand the basic characteristic of Rigvedic period. Suppose if a question comes about the basic characteristic of Rigvedic period, then what you can write. So, basically, it starts from 1500 BC to 1000 BC. This is 1000 BC. This is the classification of early Vedic period, like 1500 से 1000 BC तक. Okay, एंड मेन सोर्स जो है इस पीरियड को स्टडी करने का दैट इज ऋग्वेदिक पीरियड. इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय आर्यंस व्हाइल आर्यंस वर स्टिल इन पंजाब. हमने पढ़ा था ना दैट आर्यंस केम फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न साइड और इनिशियली वो पंजाब के रीजन में सेटल डाउन हुए, तो वहीं पर ही उन्होंने ऋग्वेदा भी कंपोज किया. सो ऋग्वेदा की कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं. ऋग्वेदा टेल्स अस द नेम्स ऑफ रिवर्स. टोटल 40 रिवर्स के नाम मेंशन है और ये नाड़ी सूक्त एक श्लोक है उसके अंदर मेंशन है. ठीक, और गंगा, सरस्वती, इंडस एंड दीज आर the rivers which are mentioned. Along with it, Rigveda also talks about Himvant, that is Himalayas, Munjavant, that is Hindu Kush mountains. तो हमें रिवर्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है, हमें माउंटेन्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है, एंड अलॉन्ग विद दैट ऋग्वेदा ऑल्सो टेल्स अस अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन. तो जो हम अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, सोशल चीज़ें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक चीज़ें पढ़ेंगे, वो सब ऋग्वेदा के आधार पर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक लिटरेचर को. जो टर्म वेदा है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज वेद.
और विद का मतलब होता है टू नो समथिंग एंड इट सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज, यानी कि किसी चीज़ को जानना और जो चीज़ आप जानोगे वो सबसे सुपीरियर होगी। सो वेदा में टोटल 4 वेदास हैं एज वी नो। ऋग वेदा जो है वो अर्लीस्ट ऑफ ऑल है एंड इसमें 10 टोटल मंडल्स हैं, आप इसको पार्ट भी बोल सकते हो। और इसमें 1028 हिम्स हैं, दैट इज श्लोक। और ये जो श्लोक थे ये अक्सर होत्रीस के द्वारा गाए जाते थे भगवान की तारीफ में। जो सेकंड वेद है दैट इज कॉल्ड एज यजुर्वेद, इसमें आपको डिटेल्स मिलती हैं सैक्रिफाइसेस की और जितने भी श्लोक हैं उनकी। और यजुर्वेद को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है, दैट इज कृष्ण यजुर्वेद एंड द सेकेंड वन इज शुक्ल यजुर्वेद। ओके, सो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द थर्ड वन इज सामवेदा, जिस दैट इज अ बुक ऑफ चैंट्स, यानी कि इसमें इंडियन म्यूजिक के जो रूट्स हैं वो ट्रेस किए जा सकते हैं। और इसमें टोटल 1549 श्लोक हैं जो कि उद्गात्रीस के द्वारा गाए जाते थे। लास्ट इज अथर्ववेद, जिसको कि बुक ऑफ मैजिकल फार्मूले भी कहा जाता है, और इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स हुआ करते थे टू क्योर डिसीजेस। बिसाइड्स वेदा देयर आर अदर सैक्रेड वर्क्स आल्सो लाइक ब्राह्मणास। ये ब्राह्मणास जो है ये वेदास की ही एक्सप्लेनेशन है, एक तरह से व्याख्या बोल सकते हैं इसको। और दूसरा इज आर्यनकास। दिस आरण्यकास इज रिटन फॉर स्टूडेंट्स लिविंग इन jungles, and this is also called as forest text. Last but not the least, Upanishads. Upanishads are philosophical text. They are also called as Vedangas. Total 108 उपनिषद हैं and oldest is बृहदरण्यका। ओके, आप इसके स्पेलिंग्स याद कर सकते हो, इट इज़ वेरी टफ टू प्रोनाउंस फॉर सम पीपल who are used to English medium, right? So let's get like let's move further and see the political organization. So political organization by and large it was a tribal society and each tribe formed a separate kingdom. For example, अगर 10 ट्राइब हैं तो 10 छोटे छोटे किंगडम्स होंगे. The basic unit of political organization was kul, that is family. Okay, a group of kul formed grama, that is a village. I mean different families will unite and they will form a village. The highest political unit was a tribe, right? And tribe it also called as jana. Some tribal kingdoms were Bharatas, Matsasyas, Yadus and Purus. ये कुछ पॉपुलर नाम है जो आपने पहले भी सुने होंगे। और हेड ऑफ द किंगडम को कहा जाता था राजन. There were two governing bodies. First one was Sabha, that is Council of Elders. Second one was Samiti, that is a general assembly of entire people जिसमें हर कोई इंक्लूडेड हुआ करता था, ठीक. एंड विधान एंड गण वर अदर असेंबलीज, इनका क्या फीचर था, नॉट इम्पोर्टेंट. द पुरोहित was first ranking official and Senani was army chief and Gramani was head of village. So this was the political structure. Now moving on to the social life. Social life में we all are well aware of four varna, right? So it comprised of four varna. On top brahmanas were there, then kshatriyas, vaishyas and shudras, and इनके functions जो थे ये side पे mentioned है. Like brahmanas were teachers, kshatriyas were rulers, vaishyas were traders and shudras were laborers. So society was patriarchal in nature. Patriarchal means that men were more dominant, women were not dominant. Okay, and child marriage was not in vogue. Right to property on things like cattle, horse, gold, land and house, it also existed. The cow was protected and it was not killed. Meat of other animals were consumed. Soma and Suma were two alcoholic drinks, right? These are just a brief descriptions about their lifestyle. Okay, so moving on to the next thing, economic life. So we know that economy was largely based on, it is believed that agriculture was practiced on a limited scale and pastoralism was the main activity. Then great importance was attached to herd of cattle and domestication was done. Trade was not on large scale. Money and markets were not extensively used.
coins were not there, right? So we can say that it was a barter economy. People took up various professions, like carpenters were there, smiths were there, weavers and potters were there, and they used to do activities like grinding of corn, etc. Medicine was developed, surgery, treatment through herbs and charm spells, as we had seen in one of the Vedas, it was used. Then pottery produced in this period was labeled as ochre colored pottery. Okay, colored pottery pe, and they have asked a lot of questions. So you can remember this word, ochre colored pottery. So let's see the religious practices. The religious practices include worshipping of various gods, and you have to remember the name of god and their roles. For example, Indra was one god, and his role was that he was a god of rain, and another thing is he was also considered as destroyer of fort, and destroyer of fort is also known as Purandar. Purandar ke spelling is Purandar, Purandar, right? And Agni was also one god. He was intermediary between god and humans. Even Agni is used in present times also in the Havan we do. So it acts as an intermediary between us and God. Similarly, Varun was one god. He was the god of water and celestial oceans. The nature of Vedic religion was henotheism, and a ceremony was practiced to worship gods. Yaj were the common practice, that is yag or yaj, that is same thing. Offerings were made, like milk and ghee were used. Similarly, sun was an important god, and he was worshipped in five forms, like god of light, god of marriage, and he was also a solar god. So there are different names. For example, god of light was Savitri, marriage Pushan, and solar god was Mitra. They all are form of sun. Then Vishnu is also a form of sun who covered earth in three steps. Other important gods were Rudra, Dyaus, यम एंड सिंधु, एंड इनके रोल क्या थे ये साथ में mentioned है, that you can see. Okay, so this was about early Vedic period. So guys, if you like the video, please subscribe to the channel for more such pointers, and you can download this PPT by commenting below. I will share this PPT with you. Thank you so much.